अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग से ऑलरेडी जो है मिस्टर चिप्स के हवाले से मैं काफ़ी वीडियोस जो है वो शेयर कर चुका हूँ, जिनमें सोल्व मिस्टर चिप्स के गेस जो हैं वो भी मैंने शेयर किए हुए हैं। तो हर साल जो है तकरीबन एक ही गेस होता है, मतलब मिस्टर चिप्स का। तो इसलिए जो है मैंने जो है दोबारा शेयर करना जो है वो ज़रूरी नहीं समझा था, लेकिन आप लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो न्यू गेस पेपर जो है बनाया गया है, उसमें से आप लोगों को मिस्टर चिप्स के इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन बता देता हूँ। जब आप लोग के पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, पहले 10 चैप्टर, उसके बाद 5 चैप्टर पार्ट 2 के, तो उनके भी मैं वीडियो जो है वो शेयर कर चुका हूँ। तो वो भी आपको देखने को मिल गई होगी। नहीं देखी तो आप लोग सेकंड ईयर इंग्लिश गैस बाय HBSA एजुकेशन लिखेंगे तो आपको मेरी तमाम वीडियो जो है वो देखने को मिल जाएंगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे भी मैं शेयर कर चुका हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन जो पैराग्राफ है वो भी शेयर कर चुका हूँ। मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो है मैंने शेयर की हुई है। तो आप लोग उसको जो है लाजमी देख लीजिएगा। मेरे चिप्स के सोल्ड क्वेश्चन जो हैं 50 वो भी मैंने शेयर किए हुए हैं, तो वो भी देख सकते हैं। तो ये जो है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है मिस्टर चिप्स के क्वेश्चन। हाउ डिड चिप्स मेजर हिज टाइम? व्हाट काइंड ऑफ स्लीप डिड मिस्टर चिप्स एंजॉय? हु वाज मेरीवेल? व्हाट डिड ही से अबाउट मिस्टर चिप्स हेल्थ? Where did Mr. Chips teach before Brookfield? Where did he leave that school? Who was Weatherby and what kind of fellow was he? Next question is, how did Mr. Weatherby advise Chips on the day of his interview? Who was Cole? How did Mr. Chips punish him? What kind of people Brookfield supply या produce? तो सवाल की स्टेटमेंट अक्सर चेंज आ जाती है, लेकिन आप लोगों ने अगर मिस्टर चिप्स को अच्छी तरह मतलब उसकी उर्दू भी पढ़ी हुई है पूरे खुलासे के तौर पर तमाम चैप्टर्स की, तो आपको जो है कॉन्सेप्ट जो है वो याद रह जाता है, तो आपको आंसर देने में आसानी रहती है। व्हाट वाज सोशल एंड एकेडमिक स्टेटस ऑफ चिप्स? व्हाट स्टेटस ऑफ चिप्स एट ब्रुकफील्ड एट 50 एंड 60? व्हेन डिड मिस्टर चिप्स रिटायर एंड व्हाट वाज प्रेजेंटेड टू हिम? और उसके बाद है, how did Chips serve या entertain the boys? Or how was Chips' hospitality? और next है, who was Collingwood? Where did Mr. Stewart Chips punish him? How was Mr. Chips' room decorated? या फिर इस तरह भी आ सकता है, how furnished at Mr. Wicket House? मतलब मिस्टर चिप्स ने उसको किस तरह फर्निश किया हुआ था। नेक्स्ट है, व्हाट वर द क्वाइट एंजॉयमेंट्स और एक्टिविटीज ऑफ मिस्टर चिप्स? उसके बाद है, हाउ डिड चिप्स फील in the company of women, or what were Chip's view about women? Next है, why did Chips not like Bernard Shaw and Epson and bicycling? उसके बाद how did Catherine look या फिर write a note on Catherine? What did Catherine think about women's rights? What were political view of Catherine? Right, first encounter between Chips and Catherine, or what happened to Chips when he hastened to the girl? What did Catherine say to Chips on the night before wedding? How much popular was Catherine in Brookfield? What kind of fellow was Mr. Chips before marriage? What change, या मतलब ये क्वेश्चन डिफरेंट तरह से पूछा जा सकता है। या फिर what change did marriage Catherine brings in Chips? What memories of Catherine haunted Chips? How did Catherine help Chips in matter of discipline? या फिर how did Catherine urge Chips to forgive the students? उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट डिफिकल्टीज डिड चिप्स फेस while राइटिंग डाउन हिज मेमोरीज? व्हेन डिड कैथरीन एंड न्यू बॉर्न बेबी डाई? व्हाट वाज अप्रैल फॉलोरी चिप्स फेस्ड? व्हाई डिड चिप्स वाज नॉट वांट टू रिसीव condolence? What sort of ground did chips wear after the death of Catherine? Who was Mr. Leold George? What did chips say to him and what was his reaction? Who was Mr. Meldrum and when did he did or write a note on Mr. Meldrum? Or when did Mr. Meldrum become acting head of Brookfield for first time? Who was Mr. Jones and what was his duty? What did Chips remember about Diamond Jubilee? Or why did Chips take Kath to London? Who was legendary lady sitting in the carriage and how did she look? Next है, write a note on Ralston. What allegations did Ralston put on Chips? Describe the row between Ralston and Chips. Did Ralston know Brookfield and its traditions? Who was Sir John Rivers? What did he tell Chips about retirement and Ralston? Write a note on Chips' farewell speech. Write on services of Brookfield during war. What did Chatteris request Mr. Chips, or why did Mr. Chips rejoin Brookfield?
What is resolve? What joke did Chips make about it? When and how did Chips perform as the head of Brookfield, or how did Chips live through 1917 and 1918? Who was strict merchants, or whom did Chips casting merchants? When did Chips make his will, or what was Chips' will? What will the two things Chips had never done in life? Who was Lanford? Who sent him to Mr. Chips? Who was Cartwright? What did he say about Chips' children? Describe the death scene of the novel. What was the effect of Catherine's death on Mr. Chips? Write a note on Mr. Chips' humor. Write a note on Brookfield. Where did Mr. Chips reside after retirement, or what was the importance of the house of Mrs. Wicket? How did Brookfield celebrate the end of World War? What type of novel is good by Mr. Chips? What sort of discussion Chips have with Lanford? Was Mr. Chips an ambitious teacher? Where and with whom did Mr. Chips go during the spring of 1896? तो ये स्टूडेंट्स कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टर चिप्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो हम लोग साथ शेयर करने थे। तो उम्मीद करता हूँ आप इनको तैयारी करने के बाद पेपर में जो आप लोगों ने 12 में से 8 क्वेश्चन करने होते हैं वो अटैम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन फिर वही बात आपको एडवाइस है कि मिस्टर चिप्स को आप इस तरह याद करें कि आप उसके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करके जाएं कि चैप्टर 1 में मिस्टर चिप्स जो है उसमें चैप्टर 1 में क्या है मिस्टर चिप्स से रिलेटेड, चैप्टर 2 में क्या है, 3 में क्या है। इस तरह आप हर चैप्टर का आपको आइडिया हो, आपको करैक्टर याद हो, आपको ईयर्स याद हो, तो इंशाल्लाह आप मिस्टर चिप्स के आराम से जो है क्वेश्चन सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। स्टेटमेंट क्वेश्चंस की चेंज होके आ जाती है, ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं सेम टू सेम यही स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट चेंज होके आ सकती है। जो मुझे लगा स्टेटमेंट चेंज हो सकती है वो मैंने चेंज करके भी उस क्वेश्चन को लिखा है, लेकिन फिर भी आप अपने माइंड में ये रखें। इंशाल्लाह पेपर जो है इतना मुश्किल नहीं होता जितना आप लोगों ने इसको अपने साथ पे सवार किया हुआ होता है, बस थोड़ा सा कंसेप्चुअल जो है आप लोगों ने पढ़ना होता है। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, ऐसे मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, तो वो टैब आप लोग को नज़र आ रहे होंगे तो वो देख लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।